honor and a pleasure to be here, especially to speak in front of the doyens and the leaders of the industry, where I learnt my ABC of polymers, my peers, my ex-colleagues from my previous company, friends, vinyl and polymer fraternity. I'm here basically to speak about and give you an overview about the world of polymers in the current uncertain world and the impact on the PVC globally. See, we cannot isolate PVC if we do not talk about what's happening in the world of polymers. We cannot isolate polymers with what's happening in the current environment. So I'm trying to give you an overview of what we can do. First understand the dynamics of what is happening, and then trying to navigate the way it is. So let me start with first introducing, as I told Mr. Narayan, we are 30 years this week, and we started with our humble beginnings with the chloroalkali industry. Over the years, we have grown to what we do today. We add a value to almost 24, 25 different product lines, which are in 4 divisions. And our core businesses vary to these 7 fundamentals, what we call distribution, market intel, risk management, logistics, finance, technical support, and sustainability. Over the last 30 years, we have grown to do more than 25 million metric tons with revenues of about $15 billion, 900 plus people in 40 different countries. We are a truly global company with about presence in 120 countries where we do business. With the volume what we do, today we have grown to become the 2nd largest distribution company globally. Well, our humble beginnings, we started with what we did in India. India was our 2nd office what we started. And today we do more than about 5 million tons in and out of various petrochemical products. And definitely vinyl and PVC is one of our largest players. I joined the company 17 years back. About the outlook of PVC sector worldwide, and here, because after having heard Mr. Mehta, the taking points are as India has demand and demand is growing, and we are still going to continue with the deficit in PVC supply, and the only solution probably, as Mr. Mehta said, is we have to think about additional investment on building capacities. With that, Mr. Mulji, call upon you to give an outlook on. And to Mr. Sanjay Mulji, Chief Strategy Officer for Tricon Energy USA. Thank you. And we have someone with us, DN sir, who has been in the PVC industry for 56 years. I think he may be the veteran in his own way. We have Mr. Kuppuswamy, who will hand over the memento to our dear session chair, Mr. B. Narayanan sir. I think his entire life he's been in PVC. Ladies and gentlemen. Thank you. Ramya, do we come to our much needed coffee break now? Clearly, looks like I think all of us need that caffeine fix. We're going to take a quick tea coffee break, ladies and gentlemen. And this is courtesy Costa Pipes. And quick announcements coming here soon. We have 1 running tea coffee counter behind the stall area and 2 counters each during AM. Good morning, all participating delegates from India and global, to all the industry leaders, my fellow colleagues from the industry, trade partners, organizers of the event, Session Chairman Mr. B. Narayan from Reliance and Mr. Sanjay Mulji from Tricon Energy.
Thanks, Nidhi, for the opportunity for being part of this 13th Vinyl India conference, and indeed a great privilege to be speaking on the subject of PVC outlook in India 2026 and beyond. To be honest, I am not too sure presenting the PVC outlook beyond 2026, as 25-26 itself has been a very, very difficult year for the PVC manufacturing industry. And frankly speaking, we have seen the lows in the industry in 2025-26 with practically no support coming in from the government. But the topic is PVC 2026 and beyond. I am quite hopeful that apart from a terrible year that we've just undergone to 25-26, the uncertainties that we are seeing in the markets, the geopolitical situation, things should stabilize down and stabilize, and we should be coming back to normal operations very soon. The past speakers and the speakers after me are going to speak on the subject, but there is probably going to be a considerable overlap in what I speak and what the others speak. I'm not going to spend time reading their CVs because it's up there and it's going to come up on the screen. And the speakers are going to speak and give us an outlook on the PVC industry in India and worldwide. So it's a very apt subject, and with just two speakers speaking and covering the entire PVC sector from India through the rest of the world. And with the current prevailing circumstances and situations around the world, I think it's the most appropriate time for the speakers to cover this subject, and a very relevant subject. And particularly in India, if we are to see, and we've been running deficits all these years as far as the PVC supply-demand situation is concerned. And we've been relying on imports, and thanks to Reliance and Adani, we're putting up the capacities. And even with those capacities coming up in next 1.5 years, still we are going to stay deficit in PVC. But let's actually hear from the eminent speakers today. I'm calling upon first Mr. Vinyl, if you can come over and speak on the Indian PVC scenario today and for the future. And we also have one coffee tea counter in the stall area. So please ensure you go ahead, grab your much to all of our delegates on the stage. Ladies and gentlemen, before we have our first tea break, we are quickly getting into our plenary session, and we have none other than Mr. B. Narayanan, Group President, Procurement, Reliance. Very warm. We have Mr. Sanjay Mulji there with us, and we shall directly get into the session. Good morning, everyone. Thank you, Elite Plus, for inviting me. What I'll do, I think I had 20 minutes probably, so I'm seeing 15. So do I need to cut my presentation? Okay. Yeah. Well, we live in a economically extremely connected world, but now which is getting geopolitically fragmented. So that creates a very complex situation, and that's what we are trying to negotiate as a world, as an economy right now. So I think, so I'm going to speak about two things. One is, how is India going to look like, or how is it going to negotiate its growth path? Second, I'll focus on manufacturing, and what does it all mean for manufacturing, the fragmented geopolitics and interconnectedness of the world, and the simultaneously playing out. So let me start by saying that after the pandemic, I think pandemic has been referred to several times. After the pandemic, we have positively surprised on the growth. I think every forecast that was made for the Indian economy, actually the numbers came out much faster, higher than that.
And now the belief is that 7% is India's potential. Potential, as economists, I think when we talk of potential, we talk of growth rate which can be sustained without generating inflation. So 7%, earlier the estimate was around 6.5%. That's from the official sources, and our assessment is also something similar. In what's going to happen in FY27, which is the fiscal year which just started, we have a backdrop of 7.6% growth last year, which is probably the highest in the world. Now, where the growth will settle, I think there's too much fog to be able to forecast any number at this juncture, but clearly it's going to be lower. Yesterday, RBI talked about 6.9%. There's a big range, and all of them depend on what is going to be the oil price, what is going to be the intensity of the conflict that is playing out. All those things have a role to play there. So I will try to make some sense of that. I think I want you to focus on this chart, which is a very useful chart if you want to look beyond what's going on currently, and also look at simultaneously what's going on currently. So there are two sets of lines that you see. On top you see the dots that you see are GDP growth rate. That is for over a period of 45 years. And on the bottom, again, I think the yellow dots are also GDP growth rate. The top one is for India. The bottom one is for advanced countries as a group. You also see straight lines passing through to the up and down of growth rate. Those are the long-term trajectory of the economy. Where is the economy moving? So I think a couple of observations from this slide. One, I think India has got extremely interconnected with the world economy, even in terms of its GDP growth. You can see that the growth cycles are synchronized. The movement around the trend is very synchronized for the last 20 years because we trade more, the finance linkages are more. But the long-term trajectory is very different. I think the advanced countries are aging, I think, and there are several issues, so their growth rates are gradually slowing down. India's growth is going up. If this was not happening, I would be very surprised and worried because we are starting from a low per capita income, and with reforms, with the focus on infrastructure, etc., you are raising your ability to grow since 1991. So clearly, and even if you look at the most recent period, which is last few years, the cycle where we grew at around 7%, I think that coincides with the cycle where advanced countries were also slightly above the trend. So the point here is that in the near term, we are not disconnected from the world, but over the long term, we can chart our own growth trajectory. I think that's the point I wanted to make out of this. Now, as far as the global economy is concerned, as I said, it's important because it does impact you in the short run. US seems to be the only outlier at this juncture. I think the latest forecast from S&P says that they'll grow at around 2.2% this year. And the reason is, it's an outlier is because the AI-powered investments are firing growth. I think that is the key engine, and consumption is still reasonably strong in US. The rest of the world seems to be gradually moving down. So this is the first set of forecasts. As the Middle East continues to play out, I think these numbers will keep getting revised, as it happened during the pandemic. Distinguished guest, our fellow member from Vinyl Industry, a very good morning. We sincerely thank the organizers of the Vinyl India Conference for inviting me on the opening day and giving me the opportunity to share my thoughts on the CHIP platform. First of all, we would like to congratulate, and I hope you may like to join me, the Vinyl India team, especially Nidhi Verma, for consistently organizing such an outstanding event over the year, elevating the conference to a truly global platform. Standing here today, we speak as someone who has spent a lifetime in this industry, learning, experimenting, facing challenges, and growing along with it. For me, plastic are not just a business, they are a journey. When we look back, we often reflect on how it all began. Many years ago, I read the words of Carl Sagan, somewhere, something incredible is waiting to be known.
The story of PVC, it was such a story. It is a story of vision, perseverance and discovery. For nearly 90 years, after Henry Victor Reynolds first discovered PVC, it remained dormant. An incredible material waiting to be rediscovered, reinvented and finally utilized for remarkable purposes. Today, when we look at the growth of polymer manufacturing industry, we see huge opportunity knocking at our door. Opportunity because the current manufacturing of polymer in our country is quite short in relation to the growing requirement in our economy. We observe the gap in demand and supply of three key commodity polymers: polyethylene, polypropylene and PVC. Currently, polyethylene capacity indigenously meets 80% requirement, 20% must be imported. Polypropylene domestic supply meets 78% requirement, 22% must be imported. But PVC resin, which we are discussing today, the domestic supply meets only 32% requirement. 68% requirement must be met through import. This puts PVC converter in a very vulnerable position. They have to depend on vagaries of import arrival. In last 6 years, the supply chain was very much disrupted during 2021 and 2022 due to COVID pandemic. Ships were stuck at various ports to check on COVID-affected personnel for several months in the last year. Extreme volatility disrupted further by Iran war. Due to this extreme volatility in arrival of PVC and pricing, the country consumption of PVC had a degrowth in the year FY21, FY22 and last year FY26. In the last 7 years, the consumption of PVC in our country had a negative growth in 3 years. On CAGR basis, the PVC consumption in our country was 4.6%, which is much lower than country GDP growth. Normally, PVC is a versatile property, should be higher than our GDP growth. PVC is a polymer that is very high percentage of use in agriculture and building industry. This versatile material finds most competitive and durable solution in agriculture, in housing, in piping, window, door, wire and cable, flooring and wall panel. PVC is the most desired material. In our country, more than 85% of PVC is used in agriculture and housing application. In China, where they consume around 21 million tons PVC annually, 65% goes into agriculture and housing. Thus, this vital material should have adequate domestic capacity of PVC instead of 68% dependence on imports. In the process, the country is deprived of getting full advantage of this versatile material. To eliminate exposure of vulnerability and shortage of PVC and to be self-reliant, the government requested to conceive and implement a suitable investor activity scheme for a larger period to attract investors to conceive and implement large local manufacturing capacity to reach annually 20 million ton installed capacity from the current very small 1.65 million annual capacity within the next 20 years or earlier. The government must assess that with such a shortfall, why investors are not forthcoming to invest. There must be some big handicap in our country. Their policies should be framed suitably to attract large investment to invest in our country to make PVC resin. Dear friends, in India, we strongly believe we are only scratching the surface of PVC potential. There are still many untapped applications, and exploring them will not only grow this industry, but it will transform sectors. The opportunity ahead is very encouraging. New applications in infrastructure, water management,
growth in housing and urban development, expanding youth in agriculture, healthcare and packaging. At the same time, across the world, vinyl associations are working to build awareness and address misconceptions. In India too, all stakeholders must come together to promote understanding, innovation and responsible use. In our vinyl industry, sustainability is no longer a choice, it is a business imperative. We are consciously working toward reducing emission and energy consumption, increasing the use of renewable energy, recycling and reusing material within our processes, designing product and systems that minimize environmental impact. But sustainability is not just about compliance, it is about innovation. Can we make products that last longer? Can we use material without losing performance? Can we create circular system where waste becomes input? These are not just environmental questions, they are business questions. And those who answer them will lead the future. Please give MP Sir his memento, please. I will request Shri S.J. Taparia-ji, Executive Director, The Supreme Industries, to please hand over the memento to Shri Anil Jain, VC and CO, Jain Irrigation System. अपना है दिल ये आज का दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जानो रे I request Mr. Sudarshan Ganpati, DCW, to please hand over Mr. Joshi from Chrysler his memento, please. And our Jaidev Meela Garu, Director for Sudhakar Pipe PVC Products, to please hand over Mr. Erin Chantekia, Partner Leader from Mrs. McKenzie, to hand over his memento, please. We have made a very beautiful memento. I'm saying it aloud. It's a little flashy, but it's okay. We made, because it's the IPL season, the memento that we made for the speakers is, you would have never seen a memento like that. Of course, it was Mr. Nanavati's idea, but we will show it to you. And I'm sure that a lot of you will be sending us requests. We will do the honors, but a little later. And ladies, oh, 1 minute, मेरे को भी आने का है. My name is Eren Çetinka. I am a partner based in Istanbul office of McKinsey, and I lead our work in petrochemicals globally. I have the honor to have the privilege to actually do some work in India and in the broader region. So very honored to be invited to address this audience. I thank my fellow panelists here for their presentations, very insightful. Today, I'd like to talk about artificial intelligence, and thanks for the last segue to artificial intelligence that you were talking about. I'll be talking about artificial intelligence, AI, and its implications in chemicals industry with a broader lens, not only in vinyls or PVC, but with a broader lens. So before I jump into the details, I'd like to actually give the 3 messages that I'd like to, I'd like you to take with you after this presentation. So the first one is the AI moment that we're going through is structural. It is not anything like the ones that we had before. It is changing the way that we work, and 3, 4, 5 years down the road, when we look back, we'll see how impactful it has been to the way that we work. So that is number 1. Number 2, chemicals as a sector is a bit behind than some other sectors in the adoption and creating value out of AI. But that also means that there is a lot of potential to be captured for especially the ones that can tap into the right resources. And the third message that I'd like to give is that the challenge to get the value out of AI
is not necessarily technology-based, but it's more around how you actually rewire your organization, how you ensure adoption by your people, and how you ensure change management to get and capture the value of AI in their businesses. So what I'd like to do in terms of the agenda, the presentation is going to come, I think, in a bit. I'd like to actually talk about three things. First, how AI is actually developing in the latest developments. The second is the value of AI in chemicals and where it is. And the third one, what it takes to scale impact. So AI has been with us for 60 years, as you say. So it starts with rule-based logic, it goes into machine learning, using numerical AI, then goes into generative AI, which actually is sped up in the last couple of years. And now what we're talking is agentic AI, which are agents that are taking actions without any prompt and helping us do our work better. So this is what is pretty much rewiring how the organizations are working. And in terms of impact in different domains in chemicals, we see 7 areas that AI is creating value. Commercial, R&D, manufacturing, procurement, support functions in particular, but also supply chain and capital excellence. And we observe that some of these domains, there is already significant value created by rule-based logic and machine learning, especially in manufacturing, and we're going to be talking about examples. But there is also other Gen AI-based and agentic applications that we expect to create significant value in these value chains. And we'll be actually talking about one by one these domains. So first, I'd like to talk about the examples from commercial, and there are several areas that we observe, from acquiring new customers to share of wallet expansion, to dynamic pricing, where you can try to forecast where the prices are going to go, and based on that you take your decisions on pricing. Force us to ensure that we dream of. Let us use these 2 days not just to discuss, listen to each other, but be catalysts for action. It is a humbling experience to put together this 13th Vinyl India with so many exigencies, but it has, with your blessings and your participation, maintained for being the largest summit globally for PVC. And we are privileged to have over 1150 delegates from 21 countries. Nepal came in as late as 8 o'clock last night, representing over 515 organizations from the entire value chain. Your presence here today sends a powerful message that even when the world is fragmented, our industry, that is the PVC industry, chooses collaboration over isolation. And that fact is by the presence of all of us here today. And that we truly celebrate. Being in a country that is India, being with the leadership that we have of our dear Prime Minister, we are the eye of the whole world for growth as well as for industry. What I see right now from this stage, a congregation of my PVC industry fraternity, to continue to push boundaries, to redefine what is possible, to say great things happen when the right people come together. Looking around this room, I think we are going to prove in this coming year. And we are guided by brilliant minds of our dear steering committee. My sincere thanks to each one of them for curating the program and nurturing Vinyl India for the past 1.5 decades. They have molded this conference. We are just the front face. I take this opportunity to thank the industry colleagues who found value in our endeavor and who have attended this edition 13 times,
12 times, 11 times, 10 times, 9 times, 8 times, 7 times, 6 times, 5 times respectively. They have joined our prestigious Vinyl India Loyalty Club, and we are very thankful to you for being a very important part of our wonderful journey. Let's ignite this vision and let the conversations begin. To set you off on this course of discovery, ladies and gentlemen, now may I have the pleasure of introducing our prestigious inaugural keynote panel. Shri MP Babu, Mr. MP Taparia, Chairman and Managing Director of the Supreme Industries, may I please request you to come on the dais, sir? And please move towards the lamp so that we can do the lighting. Shri Anil Jain, beautifully known as Anil Bhau, Vice has made every country, economy, emerging or advanced, every industry policymaker, corporate leader, or even a normal citizen, buckle up and recalibrate. Everyone is facing a stress test. Our evolved response to the current situation will require a clear-eyed diagnosis and structural modifications that are more resilient, diversified, and capable to bounce back faster. Each shock needs to be treated as an opportunity to build an economy and industry, a company resilient enough to absorb the next shock before it arrives. The agility of the response could likely determine the duration of our pain. The dust may settle very down, and ultimately the decisions conducive to the overall growth of economy will prevail. As they say, never waste a crisis. They also say the best time to come together is when the world is most uncertain. That makes this 13th Vinyl India the most aptly timed event as the first industry gathering in the current geopolitical scenario. Disruption has happened across the entire economic systems, and fundamentally the momentum has been jolted. All of us have been jolted. But the real challenge is... Respected Sri Mahavirji, dignitaries on dais, all the guests who have assembled here today from India, from overseas, from 20 countries, more than 1,000 delegates, and I see a very full hall. So first of all, congratulations to all for being here, despite the global uncertainty and unpredictability and volatility, all the T's which we can talk of, which have emerged over last 6 weeks or so. Friends, Mahavirji spoke about that potential is quite a lot in India, but actual growth in recent past has not really been commensurate to that potential. When we speak about the potential in India, and agriculture is one of the largest applications, and Indian farmers, there are 120 million farmers, they do agriculture in 140 million hectares of land. And almost about 45% of that land is still not irrigated. That means those farmers rely on the rains, and which are also patchy. Due to the climate change, the rains come, the seasons are changing, the quantity of rains keep changing. And these farmers need a reliable source of, let's say, irrigation to be able to do farming properly. And this is approximately about, I would say, at least somewhere between 40 to 50 million hectares of new land which needs to be irrigated. And that is one single big factor which would continue to create demand for the PVC pipes in India. Now, how that's going to happen? Government of India has identified approximately 30 river linking projects. In stage 1 of these river linking projects, there is more construction in terms of canals or dams, etc., etc. But then once that has happened,
then distribution happens, and that's where the PVC, polyethylene pipes, especially PVC, will come in, because one a project which was recently identified by government in UP and MP alone is about 45,000 crore rupees of investment, and it will bring approximately 10 lakh hectares of area under irrigation. That means that much of more demand for PVC. Like that, there are total 30 projects have been identified. Now this is, this river linking project is a major infrastructure project, so it will take time. The first project, the Ken-Betwa link project in MP and UP, is expected to start already in 27 and go up to 2030. And many more projects are coming at macro level, at the central level, but at the state level also, district level also, there is a big program going about connecting the rivers and seeing the water continues to flow to the regions, and that is going to create enormous demand for the PVC pipes. Beyond this area, where today the farmers are doing rain-fed farming and they need to get into doing irrigated farming, there is also demand for the PVC pipes where in the existing areas which are irrigated areas. So let's say 70 to 80 million hectares of area where farmers are already having what you call access to the water, either from a river or a canal or a groundwater, and there now government is pushing for on-farm irrigation efficiency through the drip irrigation, through micro irrigation, and where every drop counts, right, to create maximum productivity. Now, so more drop per crop. Now, and more crop per drop, both ways it works. Now, there again, in a irrigation system, 15 to 20% is PVC pipes. And that program through, in India, Pradhan Mantri Krushi Vikas Yojana, that is going on. That is where also additional demand for the PVC will continue to come into a program called PMKSY. Now, so we talked about bringing irrigation to the farmers. We talked about making existing irrigation system more efficient, and these are two important areas where demand will come from. The third important area is also what farmers are doing. That next generation of farmers are coming into being now, and they want to use the technology, they want to use the latest materials to be able to not just grow food as a matter of livelihood, just to sustain themselves, but also grow food and agriculture produce so that they can make money, convert agriculture into a business-like scenario. And friends, can you imagine a scenario where 120 million farmers, even part of them, right, let's say 10 or 20 million farmers out of 120 million, become entrepreneurs. They become business people, and therefore they want to then employ the best possible input materials so that they are able to consistently create value-added agriculture crops. So I think that's a third driver of the demand, where slowly agriculture is moving towards not just pure agriculture to grow something and give it to the government, but to grow agriculture and agriculture produce which is value-added agriculture, horticulture products, cash crops, which would generate a lot of positive surplus for the farmers so that they will reinvest into the farming. So that's a third, I think, driver of the demand, where aspirational next generation of farmers who are looking at agriculture as a business, and that would again require a lot of investment, and I think at least the farmers with whom we deal, we are able to see that they are aspirational and they want to move forward. Fourth, beyond the growth in India and consumption in India of the agriculture commodities, Government of India is nowadays also encouraging that farmers should grow not just for India and Indian consumption, but farmers should start growing things for also global markets. And that's a new shift which is taking place in India, and how agriculture is and agriculture production and productivity is in India. But you can't go and compete in the global markets unless you are very cost effective, right, your production. And with India's land holding of the farmers being very small, I think about average 1 hectare or 2.5 acres per farmer, that becomes challenging.
But friends, I'm very encouraged to say that over last decade or so, especially the young farmers are willing to adopt technologies, and even at this 3 acres or 2.5 acres average holding per land, which is one of the lowest in the world, but they are still building now with the use of technology. Again, PVC pipes, the drip irrigation, the whole thing, and the knowledge based inputs. The farmers are now able to grow even in the small land holding plots at a higher level of, much higher level of productivity than past, and in some cases even beating the global level of productivity even in 3 acre. So, for example, some areas of farmers growing sugarcane in India, which is going to create equal level of productivity to, let's say, a farmer of 10,000 acre in Brazil. When you compare, let's say Brazil is very big in sugarcane. Another force of demand which is coming through agriculture, that agriculture has been earlier thought through only for, let's say, more for food and little bit for the fiber through the cotton. But I see a definite scenario where a lot more demand is coming through the agriculture now being used for fuel. And I think the current crisis in Middle East, which is unleashed over last 6 weeks, would mean accelerated focus from the government on using more agriculture as what would you call for the fuel. Whether it is ethanol, where government is already doing 20%, and ethanol is now being created, let's say, out of sugarcane, out of corn, and so more again value added, where agriculture we are not just looking at food security or water security, but we are also looking at fuel security. And there would be more, I think, strategic policy focus and fund allocation to ensure more biogas generation from agriculture waste, for example, for the fuel, the cooking gas needs and whatnot. So I think that's a new, I think, catalyst, especially due to the current events, which is already being discussed in the government, that we do not want to be बहुत आपको नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपने हमारी इंडस्ट्री को कवर किया। बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है ये दिखता नहीं है बाहर, लेकिन जो पीवीसी प्रोडक्ट है वो जितना आपका पाइप्स है पूरी कंट्री में, चाहे बिल्डिंग्स में है, चाहे एग्रीकल्चर में है, जैसे आपने कीनोट स्पीकर्स को सुना, जितने आपके दरवाजे हैं, विंडोज़ है, मेडिकल में जो आपकी ट्यूब्स होती हैं, फ्लोरिंग है, रूफिंग है, सब जगह पीवीसी यूज़ होता है। सो ये थोड़ा ग्लैमरस प्रोडक्ट नहीं होता तो बाकी लोगों को मालूम नहीं चलता, बट ये हमारी कंट्री का बेस है, ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 दिवसीय ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या मोटिवेशन रहा है और इसके पीछे का मकसद क्या है? ये हमारा 13th एडिशन है। हर साल करते आए हैं इसको। बीच में कोविड की वजह से आई थिंक 3 साल का गैप आ गया था 2021-22 में। नहीं तो ये शुरू से आई थिंक 2011 से ये विनाइल इंडिया हो रहा है, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है ये पीवीसी का। सो अगर आप आज देखेंगे तो 21 कंट्रीज़ के लीडर्स आए हैं, जबकि आप ये देखिए हम परसों तक हमें मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। अब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन इतना जियोपॉलिटिकल इतना प्रॉब्लम हो रहा था, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, वीज़ाज़ नहीं लग रहे हैं। देन ऑल्सो 21 कंट्रीज़ लीडर्स हैव कम, विच इज़ लाइक इसका मतलब ये इतना ज़रूरी होगा कि उनको जो लीडर्स को इधर आना, क्योंकि विनाइल इंडिया का इतना महत्व है कि जितना वर्ल्ड में अगर आप पीवीसी में कहीं पर भी हैं तो विनाइल इंडिया में आपको आना ही आना है। और अगर आप पूरा पॉलीमर इंडस्ट्री देखते हैं तो पीवीसी उसका बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, एक नीश बोलते हैं ना जिसको, बहुत नीश प्रोडक्ट है ये तो। लेकिन इतना महत्व इसका इतना ज़्यादा है कि कोई भी विनाइल इंडिया को छोड़ता नहीं है। तो हमें ये वाले करने में थोड़ी जद्दोजहद हुई, बिकॉज हमें मालूम नहीं था कि लोग आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, कुछ हो गया, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती पॉलिटिकल एंगल से। तो बट फिर भी हमने, अगर मैंने जो सुबह बोला किसी ने सुना होगा, तो हमने ये कन्विक्शन लेके किया कि नहीं, हम हर साल करते हैं, चाहे लोग कम आए तो भी हमें करना चाहिए, बिकॉज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल में, पिछले साल और इस साल के अंतर में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस प्रोडक्ट में, वो विनाइल इंडिया सारी दुनिया के सामने लाता है। तो आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि जो हमने इतना अपना ट्रस्ट रखा। आई थिंक द 1150 पीपल हैव कम, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और ये पहला इंडस्ट्री इवेंट है शायद, ये जो वॉर जब से हुआ है पिछले 5-6 हफ्ते से,
और कोई इंडस्ट्री इवेंट हुआ नहीं है, सब कैंसिल हो गए हैं। तो आई थिंक अगर आप देखें तो पूरा फुल हाउस है। सो लोगों को इसके बारे में जो भी नई डेवलपमेंट्स हुई, अगर आपने अभी प्रेजेंटेशंस कुछ सुनी होंगी, पूरा ट्रेड डायनेमिक्स चेंज हो रहा है। क्योंकि इंडिया में जो पीवीसी है वो बनता इतना कम है। रिलायंस बनाता है, टीसीडब्ल्यू बनाता है, डीसीएम श्रीराम बनाता है, केमप्लास्ट बनाता है। बाकी कोई कंपनी की इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है। बाकी सारा इंपोर्ट होता है। 4.8 मिलियन मीट्रिक टन्स का टोटल डिमांड है मार्केट में, और बनता सिर्फ 2 मिलियन मीट्रिक टन है इतनी बड़ी कंपनी से। अभी ऑफकोर्स अदानी और रिलायंस का आएगा, अगले 2 साल बाद आएगा। सारा इंपोर्ट होता है। अब अगर सारा इंपोर्ट होता तो वो जो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो बंद पड़ा है, तो कहाँ से आएगा आप देखिए। तो काफ़ी दिक्कत हुई है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि डिमांड तो बंद नहीं होगी। और अभी ये टाइम होता है क्योंकि एग्री में बहुत यूज़ होता है ना पाइप्स में। सो सब फार्मर्स को सबको वो पाइप्स डालनी होती हैं, अपनी एग्री प्रोडक्ट्स में होती हैं। सो बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे पीछे, बट अभी गवर्नमेंट ने आई थिंक पिछले कुछ 10 दिन पहले उन्होंने ये किया कि जितना इंपोर्ट ड्यूटी है वो ज़ीरो कर दिया 2 महीने के लिए, क्योंकि उनको दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं सब लोग। उससे फिर अभी थोड़ा मतलब पीपल हैव बीन एबल टू कम बैक टू द नॉर्मल प्रोडक्टिव्स। अब मैं विनाइल इंडिया पीवीसी की बात करें तो हर साल जब भी इवेंट होता है नई मैन्युफैक्चरर कंपनियां जुड़ती हैं, तो इस बार एवरी ईयर की बात करें तो इस ईयर जो है कितनी कंपनी आपसे मर्ज हुई है? अभी टोटल हमारी कंपनीज आज की डेट में, हम जैसे हर रोज़ हमारा एक अगर किसी ने देखा होगा तो हमारा एक सोशल मीडिया का अकाउंट रहता है। हम हर रोज़ एक पोस्ट डालते हैं विनाइल इंडिया की। तो कल शाम तक हमारी 515 कंपनीज रजिस्टर करी हैं। 515 कंपनीज़ के 1150 लोग रजिस्टर किए हैं। 22 कंट्रीज़ हैं, 21 कंट्रीज़ हैं। कल रात को नेपाल आया है, नहीं तो 20 थे। कल रात को नेपाल ने एक डेलीगेट ने रजिस्टर किया है। इसमें से अगर आप नहीं बोले ना साहब, सो आई एम नॉट सो श्योर, बट आई थिंक पार्टनर्स हमारे कुछ 12 पार्टनर्स जो लोग ये जिसके लोगोज लगते हैं ना, जो पार्टनरशिप लेते हैं, वो नई कंपनीज 12 आई हैं। डेलीगेट्स में मुझे देख के बताना पड़ेगा एग्जैक्टली कितनी नई आई हैं। लेकिन ये जो आपका फ्लोरिंग देखा है आपने आजकल, अगर आपने जैसे हॉस्पिटल्स में फ्लोरिंग होती है, आपके जो नई नई बिल्डिंग्स आती हैं उसकी फ्लोरिंग होती है, वो सब पीवीसी की होती हैं क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और आपका जो डोर्स एंड विंडोज़ होता है वो साउंड प्रूफ होता है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसकी वो बहुत ज़्यादा, हेवल्स कंपनी है या सिंटेक्स है, ये सब लोग इसका फायर का बहुत ज़्यादा आगे रहता है कि बहुत ऊपर टेम्परेचर्स तक भी वो फायर को कैच नहीं करता है। फायर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इस प्रोडक्ट की, तो इसकी वजह से इसकी क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं। तो जितनी आपकी केबल्स हैं ना, अगर आपने देखा इस साल डेटा केबल्स कितनी ज़्यादा जा रही हैं, बिकॉज सब लोग अपने डेटा सेंटर्स बना रहे हैं और पूरे इंडिया में बना रहे हैं। आपने देखा बाहर की जितनी कंपनीज है, गूगल है, ये जो हैदराबाद, सिकंदराबाद, बैंगलोर, इसमें डेटा सेंटर्स कितने ज़्यादा रहे, उसमें सब केबल्स पीवीसी की होती हैं क्योंकि उसमें फायर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसको वंडर प्रोडक्ट बोलते हैं पीवीसी को। इतना ज़्यादा ग्रोथ है इसका, 10% से ऊपर ग्रोथ है। और मुझे नहीं मालूम है किस इंडस्ट्री में 10% ग्रोथ है आज की डेट में। सब लोग थोड़ा अपना धीमे से पैसा खर्च रहे हैं ना आजकल। पीपल आर नॉट स्पेंडिंग, दे आर काइंड ऑफ बीइंग अ लिटिल कंजर्वेटिव। पर ये प्रोडक्ट ही इतना ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट, इतना डिमांड है कि सब इंपोर्ट होता है। आपसे सोचिए आप। तो नई कंपनीज जो आई हैं मेजरली, सर आपने जो पूछा, केबल्स में है, वायर एंड केबल्स बहुत बड़ा फील्ड है। डोर्स एंड विंडोज़ में है, जो हमारे बॉम्बे में हम लोग रहते हैं, गणपति आता है तो 2 बजे तक हम सब घर के अंदर ही नाच रहे होते हैं क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है, बाहर से सोने को नहीं मिलता, सब लोग स्ट्रीट पे होते हैं। पीवीसी के जो विंडोज़ एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो फायर रेजिस्टेंट है, ऊपर से पूरे साउंड प्रूफ होते हैं और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। आप लोग देखिए, आपके जो जब आप अपने घरों में देखेंगे, पता नहीं आपके जो बिल्डर्स हैं, आप पूछिएगा कि विंडोज़ उनकी सब पीवीसी की होती हैं। आप हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं, जितने आपके कैथार्टिक हैं, ब्लड बैग्स हैं, जो अपना वो लगता है ना कैथार्टिक, अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, वो सब पीवीसी का है। आपका जब कोविड हुआ था, पीवीसी का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डिमांड आया था 2 लाख, ये जो आपका इंटरवोवन का बनता है ना, जो सब लोगों ने यूज़ किया था। और जितना आपका वो कर्टन्स बनते हैं, आपने देखा है जो जब कवर करते हैं, जब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना होता है, वो सब पीवीसी का होता है। अम्ब्रेलाज होते हैं आपके, वो पीवीसी के हैं। जूते आपके सब पीवीसी के होते हैं। तो रोज़मर्रा में पीवीसी बहुत यूज़ होता है, हम लोग को मालूम नहीं चलता कि वो भी। लेदर अभी आजकल कोई यूज़ नहीं करता है, लेदर में इतना प्रॉब्लम्स होता है शूज़ के लिए। सब इंडिया का इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊँगी। ये जो कंपनी सब कर रही है ना, आप यहाँ पर बहुत लोगों को देखेंगे जो पीवीसी इंडस्ट्री से है ही नहीं। अगर मैं नाम भी दे सकती हूँ आपको, ये आपका राजू कंपनी है, मेरे को आगे देखे तो मुझे मालूम है यहाँ पर,
वो लोग ये देखने के लिए आते हैं कि क्या चल रहा है लेटेस्ट पीवीसी में, और आप अगले 3 महीने में देखेंगे वो अपनी फैक्ट्री डाल लेते हैं, बिकॉज इसमें ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, डिमांड इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर लोग अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हैं, जो इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग। क्यों बहुत कंपनीज़ का यहाँ पर तालमेल होता है, अपना टेक्नोलॉजी बाय करते हैं लोग, अपनी जॉइंट वेंचर करते हैं, क्योंकि इतने फॉरेनर्स आते हैं। आपने देखा कितने फॉरेनर्स हैं, ताइवान से आए हैं, चाइना से आए हैं, जापान से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, सब जगह से आते हैं। उनसे ये प्री मीटिंग, हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर जैसे आप हमारे आ रहे हैं विनाइल इंडिया में, इतनी दूर से आ रहे हैं, इनको बहुत तकलीफ होती है इंडिया में सब इंडियन के सब सीईओ से मिलने को, इधर जाना, बैंगलोर जाना, दिल्ली जाना, कितना वास्ट है हमारा कंट्री। हमने एक सॉफ्टवेयर यहाँ रखा होता है कि पहले से अगर आपने इनसे मिलना है, आपका पूरा डिटेल सॉफ्टवेयर पे आ जाता है, पहले से आप प्लान कर लेते हैं, मीटिंग डाल देते हैं कि मुझे आपको विनाइल इंडिया पे मिलना है, उनका इतना टाइम इतना सेव हो जाता है, और बहुत बिजनेस डील्स होती हैं विनाइल इंडिया में। हमें भी रॉयल्टी मांगनी चाहिए, अगली बार से मांगेंगे, हम मांगते नहीं अभी। छोटे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेंगे? जो स्मॉल सिटीज़ में छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ये आपने बहुत अच्छा बात बोली, क्योंकि हम लोग बॉम्बे में ही करते हैं, हमारा ये थोड़ा ड्रॉबैक मांग सकते हैं आप। हमें छोटी सिटीज़ में भी विनाइल इंडिया को लेके जाना चाहिए। ऐसा इच्छा तो है, बैंडविड्थ थोड़ी बढ़ा के हमें छोटी सिटीज़ में जाना चाहिए, ऐसा आपका थैंक यू फॉर दैट आइडिया, हमें करना चाहिए। अभी हम नहीं करते हैं, हम करेंगे, वी शुड डू दैट, क्योंकि छोटा छोटा वर्टिकल अगर सब इतने बड़े लोगों को थोड़े भी चले जाएँ तो सबको इतना पता चले कि आजकल कौन सा ऐसा वर्टिकल है जिसमें इतनी ग्रोथ है। आप देखिए, ये यहाँ ग्रोथ है तो हमें लोगों को मालूम नहीं है ये, तो शायद हमारी तरफ से ये थोड़ी भूल है, हमें करेंगे, हम इसको सुधारेंगे, विल टेक इट। तो फिर आपको उधर बुलाएंगे, इंदौर और भी, शिमला से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ भी चालू करते हैं। ऑनलाइन तो जाइए सर। ऑनलाइन में ना साहब, मैं ना बहुत ऑनलाइन का फेवर में नहीं हूँ। मैं मतलब जब हमारा कोविड भी हुआ था ना, तो हमने 2.5 साल तक कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी, तो वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि टीम हमारी बाय गॉड्स ग्रेस हमने सब मेंटेन करी, हमने नहीं करी, क्योंकि मेरी ये फीलिंग है कि जो ऑनलाइन में होता है ना, वो ऐसे भी यूट्यूब पे मिल जाता है। ऑनलाइन में मैं क्यों बैठ के सुनूं किसी को, वैसे ही यहाँ होता है, बंदे को बात करने का बात होता है, आप Q&A करते हैं, अभी आप देखेंगे Q&A हो गए, एक दूसरे से सब लोग मिलते हैं, वार्तालाप होता है, विचार विमर्श होता है, वो होता है सर मीटिंग। वो ऑनलाइन में सर मैं उसके, जबकि हमने कोविड के टाइम पे हमने कुछ और किया था, वो हम आपको यूट्यूब का चैनल देंगे, वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, पर वो ऐसा नहीं था कि आपको बैठ के सुनने का है, वो हमने आपका रिकॉर्ड किया और आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई पैसे नहीं, आपका जब मन करे आप उसको सुनो, उसमें बहुत ज्ञान था। वो हमने कोविड में किया था, क्योंकि हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था, पर वर्चुअल में सर मेरा विश्वास नहीं है, आई एम सो सॉरी, मैं उसमें मानती नहीं हूँ, और जो हम मानते नहीं वो हम करते नहीं। तो 2.5 साल तक हमने कोविड में बिना किसी रेवेन्यू के चलाया वो वाला और, बट हम सिटीज़ में जाके ऐसे ही करेंगे, 2 दिन का नहीं करेंगे, 1 दिन का कर लेंगे, सुबह से शाम तक, ताकि लोगों को ज़्यादा पैसा भी ना देना पड़े, थोड़ा मतलब वो खर्चा भी निकल जाता है, करेंगे सर। अच्छी जो जर्नी रही है एंटरप्रेन्योरशिप की, उसमें मार्केटिंग और इंडस्ट्रियल जो पार्टनरशिप है, उसका कितना बड़ा रोल रहा है? सर मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ NIT से, पॉलीमर प्लास्टिक का मेरे को P नहीं पता है, अभी थोड़ा बहुत पता होगा, पहले तो बिल्कुल नहीं मालूम है। MBA हूँ मार्केटिंग में, लेकिन मैं रिलायंस में बहुत साल रही हूँ, 9 साल, और मैंने मुकेश भाई के साथ, और मैं आई बीन इन द कॉर्पोरेट एज अ GM फॉर कॉर्पोरेट, और एक कंपनी थी मैक्स मोबाइल, वो मोबाइल करती थी, वहाँ की मैं CEO थी। तो एक अपॉर्चुनिटी आई, विनाइल इंडिया की ही अपॉर्चुनिटी आई थी 2010 में। हमें लगा कि एक इंडिया का ग्रोथ यहाँ पर है, डिमांड यहाँ पर है, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं जो सब लोगों को ऐसा डाल पड़े कि इंडिया बाय गॉड्स ग्रेस, हमारी तीनों कॉन्फ्रेंसेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हैं। आपको मतलब दे आर बाय गॉड्स ग्रेस, हमारा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस इंडिया की, तो वी बीन एबल टू ब्रिंग इंडिया ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। सब फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं, कितना बिजनेस होता है आप समझिए, और सर फॉरेनर्स ना इंडिया में आएंगे नहीं अगर उनका धंधे का उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई नहीं आएगा अपना काम छोड़ के, उनको यहाँ पर वैल्यू मिलती है। कहाँ ग्रोथ, जर्मनी में ग्रोथ नहीं है, यूरोप में डी ग्रोथ है सर, वहाँ बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, जापान में डी ग्रोथ है, चाइना में ओवर कैपेसिटी है, वहाँ पर 1 चाइल्ड प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर डिमांड ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी है वहाँ पर, वो सारा माल उठा के कंट्रीज़ में भेज देते हैं लो रेट पे। तो इंडिया ही ऐसी जगह बची है अभी मेरे हिसाब से जहाँ पर ग्रोथ है, और बाय गॉड्स ग्रेस ये प्लेटफॉर्म हमारा रेडी है बिल्कुल, तो तभी इतने फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि और हमारे इंडियंस को बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है। जो यूरोप की टेक्नोलॉजी है ना सर, जो मशीनरी होती है ना, चाइना की मशीनरी, आई एम सो सॉरी टू से, हमारे चाइना के बहुत लोग हैं, स्पीकर्स भी हैं चाइना की, बट
मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन यूरोप की मशीनरी उनका कोई मेल नहीं है। हमारी इंडियन कंपनीज भी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जर्मन और यूरोपियन कंट्रीज़ की मशीनरी बहुत अच्छी है। तो हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है, वो सब लोग आते हैं, अभी वहाँ पर ग्रोथ है, उनको इंडिया में बेचना है। हमारे यहाँ पर लोग रेडी हैं, आपको मालूम है हमारे धंधे में कोई सब एकदम गुजराती हैं, हमारी मारवाड़ी है, हमारी इंडस्ट्री में धंधा उनको A1 आता है बिल्कुल करना, बहुत अच्छा डील हो जाता है। एवरीवन, हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आता है इस विनाइल इंडिया के यहाँ से, और इंडिया में लाने के लिए यहाँ पर सेठ लोग बैठे हैं, वो उनका वो हो जाता है और वो इंडिया में आ जाता है, तभी तो नई कंपनीज आती हैं। भाई हमने सर ये ना 15 साल का जर्नी है, आपने पूछा ना 15 साल का, इसको ना सॉरी टू से दिस वर्ड बट इसमें बहुत मेहनत लगती है। लोगों को लगता है कि क्या है, लोगों को बुला लिया स्पीकर्स, लोग आ गए, इसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, लेटेस्ट स्पीकर का वर्टिकल क्या है, कौन सबसे दुनिया में सबसे लेटेस्ट क्या चीज़ आई है, वो हम कोशिश करते हैं कि अपने यहाँ पर लेके आए। हम नॉर्मली हमारे पास 100 रिक्वेस्ट आती है, हम 2 लेते हैं सिर्फ, हम लोग नहीं लेते, क्योंकि वो जो सबको पता है उसको क्यों लेने का है फिर। हम यहाँ पर जो पब्लिश करते हैं वो लेते हैं जो कहीं पर किसी को ना मिले, तभी आते हैं। अगर बात करें तो क्या फ्यूचर देखते हैं किसका? बहुत ब्राइट है सर। 10% 11% ग्रोथ कौन सी इंडस्ट्री में है ही नहीं। सब जगह तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए आप सर, इंडिया में ही इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना ग्रोथ है, रोड्स है, बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, हॉस्पिटल्स है, डेटा सेंटर है, सब जगह तो पीवीसी है, हर जगह पीवीसी है, बहुत ब्राइट है सर। किसी को आपके कोई जानने वाले हों जो बोलते हैं कि हमें कोई नई इंडस्ट्री में जाना, तो आप पीवीसी बोलिए, बिकॉज इसमें ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग भी थोड़ा साइड पर करिए एक बार किसी के साथ डील करके, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, एंड आई एम सो थैंकफुल सर, आपने एक नॉन ग्लैमरस इंडस्ट्री को कवर किया, बट बहुत बहुत ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है ये। आपने देखा इतनी, कैसे बोलूँ आपको, एक इसको हम सेलिब्रेशन बोलते हैं पीवीसी की, मतलब सब जैसे है कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के, सब कॉम्पिटिटर्स रहेंगे ना, एक ही चीज़ बनाएंगे, पर सब एकदम भाईचारा के साथ काम करते हैं। एवरीवन विल बी टुगेदर, आपको देखेंगे। सो एक अलग तरीके का है ये, और ये बाहर नहीं जाता, लोगों को मालूम होता, यही मिलेगा आपको, बाहर नहीं होता। थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद है सर।